सलाम, मैं अंबर रहीम शम्सी हूँ। I'm director at the Center for Excellence in Journalism. Welcome to नाजुक मोहर, जो मैं co-host करती हूँ with Uzair Yunus. And Uzair, you can do your own introduction yourself. मेरा नाम उजैर यूनुस है। आई थिंक इंट्रोडक्शंस अब इतनी दफा हो चुकी हैं अंबर, नाज़रीन को अब जरूरत नहीं है। न्यू वंस नो आई एम बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी, डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इनिशिएटिव, एंड दिस इज एपिसोड आई थिंक 7 ऑफ नाजुक। Yes, it's episode 7. लेकिन उजैर, इस वक्त मईशत पाकिस्तान की जो है वो भी नाजुक मोड़ पे है, और इस वक्त जो आलमी सतह पर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिससे ये जाहिर होता है कि आलमी सतह पे भी काफी ममालिक जो है वो भी नाजुक मोड़ पे है। So let's start off with the economy, because I think the big story, हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी खबरें जो हैं पाकिस्तान में आई हैं और जिस पर काफ़ी डिस्कशन भी है। एक ज़ाहिर एक बड़ी खबर जो थी, जो शहबाज शरीफ साहब के लिए एक फतह भी थी, डेली मेल ने उनको माजरत कर ली थी, वो मामला सेटल हो गया था। जो डेविड रोज ने खबर शाया की थी, शहजाद अकबर सहूलतकार थे डिफिड के हवाले के फंड्स, एंड इफ यू डोंट नो, डिफिड इज दी ऑब्वियसली फॉरेन एड जो एजेंसी देती होती थी सम इयर्स अगो, और ये अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ फंडिंग थी जिसपे ये बताया जा रहा था कि these funds were rerouted through various middlemen, जो टीटीज वाला मामला है, and they were sent to शहबाज शरीफ। But that story obviously was a big deal made of it. शहजाद अकबर जिन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस पे भी की थी, और वो उनका जो ताल्लुक था डेविड रोज के साथ, मुलाकातें उस वक्त भी बात हुई थी। अब बात ये मामला तो यही हुआ है कि डेली मेल ने आफ्टर शहबाज शरीफ डिड लॉन्च्ड डेफेमेशन केस अगेंस्ट डेली मेल, माजरत कर ली है। इस पे भी काफी डिबेट हो रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये, अगर आप उसका अपॉलॉजी को पढ़ें जो शाया हुई थी डेली मेल पे, वो कह रही है कि ये जो इल्जाम था कि नैब उसकी तहकीकात करी, ये इल्जाम गलत था, और उस पर वाज़ेह तौर पर उस पर माजरत की गई कि ये खबर दी गई थी। लेकिन साथ साथ आई थिंक ये भी याद रखने की जरूरत है कि अगर सिर्फ नैब के हवाले से खबर होती तो उसके कंटेंट्स चेंज हो जाते उस पीस के, उस आर्टिकल के, और वो कंटेंट, वो आर्टिकल पूरा का पूरा इस डेफेमेशन केस के बाद, सेटलमेंट के बाद रिमूव हो गया है, which tells you that the entire piece, report itself was deemed defamatory. It wasn't just a part of it. So I think that was a big victory for Shahbaz Sharif, but I think that victory aside, इस वक्त जो पाकिस्तानी मईशत में जो परेशानी इस वक्त पाई जा रही है उसके हवाले से, डिफॉल्ट की हम बार बार बात कर रहे हैं, that remains, and I'd like you to talk about that. अंबर, पहले तो डेली मेल वाले ओवरव्यू का शुक्रिया, क्योंकि आप जर्नलिस्ट रही हैं और मुझसे काफी लोग सवाल कर रहे थे कि जी आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर स्टोरी हट गई है तो इसका मतलब कि वो नैब का सिर्फ Exactly. मामला If the नहीं था। entire story has been removed, if it was just कि वो जो नैब का पोर्शन था अगर वो रिमूव करते, then I think the rest of it would hold. I think it's also interesting कि 2 दिन बाद उस वक्त डेविड रोज ने भी ट्वीट किया था, again maintaining that he can't talk more about it, but you know, he maintains his story is true. However, the story was removed in its entirety. और ये भी खबर है कि he's actually left Daily Mail and joined other stories. There's also stories about how there were other reports of his that were got him into trouble and Daily Mail into trouble in the UK courts. तो डेविड रोज की लगता है लिंक्डइन चेक करना होगा कि स्टेटस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन मेरे जो इंसाफियन दोस्त है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे आपने जैसे डिस्क्राइब किया, इस पे हमारे नए स्पिनर की तरह गूगली डालने की कोशिश की। मुल्तान की पिच पे उन्होंने 7 विकेटें लेके गूगलियां डाली, बेन स्टोक्स वाली थी, लेकिन आउट नहीं हो सका लगता है खिलाड़ी। तो थैंक यू फॉर दैट ओवरव्यू। और मईशत की जहाँ तक बात है अंबर, ऑब्वियसली आप मेरे से ज़्यादा जानती हैं क्योंकि आप वहाँ हैं, मैं तो यहाँ बैठ के लोगों से बात करके ही मालूमात हासिल कर सकता हूँ कि नाजुक सूरत हाल ही है। और इसका जो समरी थी वो ये कि इस हफ्ते एक दोस्त का मैसेज आया, उसने कहा कि मैं जो है मनी चेंजर पे गया $700-800 कन्वर्ट कराने रखने के लिए, और उस मनी चेंजर ने मेरे से इतने सवाल किए जितने मेरे ससुर ने जो है मंगनी से पहले सवाल नहीं किए थे कि क्यों, किसके पैसे हैं, क्यों कराने आए हो, बाहर जा रहे किस हो, चीज के लिए इस्तेमाल, बाहर किस जा रहे हो, चीज के कहाँ लिए इस्तेमाल इस्तेमाल होंगे। है, अपना अंगूठा दिखाओ, अंगूठा उसने छपवाया। तो एक तो ये एक उसने एग्जांपल दिया कि भाई ये सूरत हाल है। दूसरा एग्जांपल बड़ा फनी था, और ये अब मतलब आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन पाकिस्तान। एक ने कहा कि भाई मैं जब गया तो मनी चेंजर के पास थे ही सिर्फ $20, और जितनी देर में मैंने सोचा कि मैं लूं कि ना लूं, एक और बंदा आया और वो $20 भी लेके चले गया।
वहां से। तो फिर मनी चेंजर ने कहा कि सर आज की डॉलर की सप्लाई बस यही है, अब आप कल आइएगा सुबह तो शायद कुछ और डॉलर हो, शायद शायद कहीं से कुछ पैदा हो जाए। शायद कहीं से कुछ आ जाए। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग थी अंबर, और इस पे कुछ लोगों ने ट्विटर पे भी लिखा, आई थिंक हमारे जो तहरीक इंसाफ के इकोनॉमी के स्पोक्समैन है मुजम्मिल असलम, उन्होंने भी इस पे कुछ आरडीए वाली उन्होंने ट्वीट्स की। आरडीए वाला तो मुझे नहीं पता उसका क्या स्टेटस है, लेकिन एक और जो चल रही थी बात के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर्स हैं, क्या उनको उनके डॉलर दिए जा रहे हैं कि नहीं। उसकी जहां तक मुझे इत्तला है वो ये है कि because there is obviously a full on rationing going on from the state bank side in terms of LC किस तरह क्लियर हो रही है, उसकी लिस्ट बन रही है, फिर अप्रूवल आता है एक्सेट्रा। तो इसी तरह फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर्स में कुछ ब्रांचेस पे आए, दिस इज नॉट अ नेशनल सर्वे दैट आई हैव डन बट आई नो इट एटलीस्ट फ्रॉम कराची, कि अगर आप कुछ ब्रांचेस पे जाएं और कहें कि मेरे डॉलर्स आप मुझे दे दें 5,000 जो मैंने रखे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स मेक इट हाइपोथेटिकल, तो उस पे कहा जा रहा है कि बैंक कहती है कि आप आज रिक्वेस्ट करते हैं और आप 48 से 72 घंटे बाद आइएगा तो हम आपको आपके डॉलर दे देंगे। तो दैट राशनिंग ऑब्वियसली इज एविडेंट। नाउ इट मे बी कि वो स्पेसिफिक ब्रांचेस का इशू हो जहां डॉलर इन हार्ड करेंसी मौजूद ना हो सकता है, क्योंकि बैंक्स डोंट रियली होल्ड डॉलर्स दैट मच ऑल द टाइम अक्रॉस द कंट्री, बट that's adding to the fear and to this belief कि इकोनॉमी में डिफॉल्ट का समय है या डॉलर नहीं है। आखिरी बात इस पे अंबर ये कि दिस इशू इज इनहेरेंटली लिंक्ड टू कि क्यों लोग अपने डॉलर कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज रिलेटेड टू द डार पैग दैट इज ऑन राइट नाउ। वो ये कि उन्होंने इंटरबैंक मार्केट में एक रेट रोक के रखा हुआ है, और जो स्प्रेड है इंटरबैंक और इनफॉर्मल या लिक्विड मार्केट का जो जो लोग रिटेल ट्रांजैक्शंस करते हैं वो 20 से 25 रुपए हो चुका है इस वक्त। तो अगर आप एंड जस्ट बिकॉज आप समझते हैं कि सब लोग हमेशा स्प्रेड समझते हैं, जस्ट फॉर क्लैरिटी, स्प्रेड से मतलब आपका यही है कि जो आपका ऑफिशियल डॉलर का रेट है और जो मार्केट में बिक रहा है बिल्कुल ऑफ कोर्स, या और खरीदा जा रहा है। वो जो हवाला हुंडी में रेट दिया जा रहा है, या आप रिटेल साइट पे अगर डॉलर खुद उठाना अपना रुपी कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो आपको एक्सचेंज रेट्स कंपनी से बाहर क्या रेट आपको दिया जा रहा है, राइट। So that basically is a gray market transaction, but the gray market, like anything else in any basic economy, it shows you whether the economy is functioning efficiently or not. For example, अगर अमेरिका में हम मिसाल दें तो कुछ महीनों पहले बेबी फार्मूला का शॉर्टेज हुआ था, तो शॉर्टेज की वजह से जो ऑफिशियल रेट होता था बेबी फार्मूला की, जो आप सीवीएस से जाके या वॉलमार्ट से जाके खरीद सकते थे, वो क्योंकि नहीं मिल रहा था वहां पे, कई जगहों पे आउट ऑफ स्टॉक था, तो अगर आप ईबे पे जाते या प्राइवेट सेलर से खरीदते तो आपको 20-30-40% ऊपर पे बेबी फार्मूला मिलता था। तो वहां भी स्प्रेड था बेबी फार्मूला का क्योंकि शॉर्टेज थी। इसी तरह डॉलर की शॉर्टेज की वजह से ये 20 से 25 रुपए का स्प्रेड है। और एडिशनली अगर आप कुछ लोग मैं जिनको जानता हूँ अब्रॉड कर रहे हैं ट्रैवल और अपना क्रेडिट कार्ड पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो गलती से चल गया तो उस पे जो बैंक रेट लगा रहा है वो भी इंटर बैंक रेट से ऊपर है रेट। तो इवन ऑन दोस ट्रांजैक्शंस द बैंक इज सेइंग कि भाई ये जो 222 का रेट है उस पे हम आपकी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं कर रहे, हम 245, 230, 240 आसपास इसके ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। इट वेरीज बट दैट स्प्रेड एग्जिस्ट्स बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट एट दिस पॉइंट। ओके, सो मैं आपको उसको थोड़ा सा सियासत पे बात कर सकती हूँ। इस वक्त जो जाहिर हो रहा है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मैं फिर इस्लामाबाद भी गई हुई थी और मैंने कुछ लोगों से बात की थी, एंड देन देयर ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ऑफ द इकोनॉमी हु कोरॉबोरेटेड दिस। इस वक्त जो मईशत का जो कमान है वो इस वक्त डार साहब के पास मुकम्मल तौर पर है। और ये क्यों परेशान करना चाहिए? इसलिए क्योंकि ये मईशत पे अगला जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ये एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी वजीर आजम पर भी आती है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, जब मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे, उनको ही वाज केप्ट ऑन अ शॉर्ट लीश, ही वाज बीइंग ओवरसाइट जो थी वो शहबाज शरीफ साहब की थी। इस बार इस वक्त नजर जो आ रहा है कि इस वक्त इसाक डार साहब ना सिर्फ सियासत भी संभाल रहे, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, आरिफ अरबी के साथ बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को मुज़ाकराती मेज पर लाने, यानी उनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो उनको क्या कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी साथ साथ कर रहे हैं और मईशत को भी देख रहे हैं। और इसका इस वक्त जो एक सेंस इस वक्त यही है कि नहीं संभल रही है इसाक डार साहब से मईशत, नो मैटर, एंड ही इज मोर ब्लस्टर देन एक्चुअल एक्शन, क्योंकि इस वक्त आपका आईएमएफ का रिव्यू की मामला लटका हुआ है।
जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ आईएमएफ के मामले की जहां तक बात है, उसकी दो फैंटास्टिक रिपोर्ट्स आई जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं कि एक मामला कहाँ अटका हुआ है, और वो है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का मामला। उस पे या शहबाज राना ने ट्रिब्यून की स्टोरी की, और फिर अरीबा शाहिद ने जो है प्रॉफिट के लिए एक एक्सप्लेनर लिखा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये एक बड़ा होल्ड अप रहा है। ये 2008 से कम से कम ये आईएमएफ की कंडीशन रही है कि आप एक सिंगल ट्रेजरी अकाउंट क्रिएट करें। आम अल्फाज में इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और उसके जो इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी इदारे, बाकी इदारे, वो रन करते हैं वेरियस अकाउंट्स फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसके अंदर होता ये है कि जैसे आप और मैं हैं अंबर, अब अगर हमने 15 20 40 अकाउंट खोले हुए हैं तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस टू ट्रैक कि किस अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है। मेरे तो बच्चे नहीं है, बट अज्यूम करें बच्चे हों तो किसी ने पिन कोड चुरा लिया, उसने 500 इधर से निकाल लिया, 1000 उधर से निकाल लिया, आई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक, और समबडी स्टीलिंग मनी फ्रॉम मी, राइट? तो आप यूजुअली कॉमन सेंस होता है कि आप 2 से 3 अकाउंट अपने रखते हैं सो दैट यू कैन कीप ट्रैक ऑफ इट। इसी तरह 2008 से आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है कि आपके जो ये मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कई एनबीपी में हैं, कुछ अस्करी बैंक में हैं, कुछ कहीं और हैं, इनको आप एक अकाउंट क्रिएट करें ताकि इट बिकम्स वेरी इजी टू मैनेज द कैश ट्रांजैक्शंस और द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विच इज इनहेरेंटली लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, बिकॉज अब जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑफ पैसे कोर्स। मार्केट में आते हैं, तो इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। तो 2008 में पाकिस्तान ने आईएमएफ को कहा था हम करेंगे, वो नहीं हो सका, कहानी चलती गई चलती गई चलती गई। 2019 के आईएमएफ प्रोग्राम में फिर वापस इस पे बात हुई, उन्होंने कहा हम इस पे प्रोग्रेस करेंगे, नहीं हुआ। अब वापस प्रॉमिस किया गया था कि हम इस पे ये प्रोग्रेस एक ऐसा करेंगे, नहीं। वादा है जो बहुत मुश्किल से पूरा हो पा रहा है। और उसकी वजह में ये भी जाहिर है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का एक बजट बैलेंसिंग जो इनको करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, जो पेश करना पड़ता है, हिडन अकाउंट्स हैं मल्टीपल, एंड आई थिंक इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर एज वेल विद इन द गवर्नमेंट। ऑनेस्टली क्योंकि अगर आपका डिफेंस का बजट है वो भी मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं करता इन द बजट इट्स प्रेजेंटेड। That is just one example of the multiple power centers and also multiple accounts that you have to hold in order to keep those books balanced or looking balanced at least. बिल्कुल, और इस प्रोग्राम के अंदर जो वादा लेटेस्ट किया गया था वो ये था कि दिसंबर 2022 तक, यानी कि इस माह तक, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी डिफेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए, वो बंद कर दिए जाएंगे, और वो बंद नहीं किए गए। और जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर हम, इट्स वेरी हार्ड टू फुली गेट द डॉक्यूमेंट्स के इसमें पैसे कितने हैं, लेकिन एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि ये 1000 अरब से 2500 अरब तक का जो एक हजूम है, उतने पैसे इन अकाउंट्स में है, तो उनको कन्वर्ट करना है, और ये हो नहीं पा रहे। और जो मेजॉरिटी है इस वक्त होल्ड अप, वो डिफेंस मिनिस्ट्री साइड पर है। Not surprising, not surprising. I think what we need to see now is what January will bring, because that review is incredibly important. इस वक्त आपका डिफॉल्ट का जहां तक again मैंने कुछ सुना है, पढ़ा है, माहिर मईशत जो बात कर रहे हैं कि अगरचे डिफॉल्ट का इमीडिएट थ्रेट नहीं है, दिस इज अ प्रेल्यूड एटलीस्ट। दूसरा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जो है, वो बहरान जो है, वो काफी संजीदा जरूर है। आईएमएफ से आपको पैसे चाहिए, दोस्त ममालिक से चाहिए, अभी सऊदी अरब ने भी कुछ रोल ओवर किया है, बट द अदर थिंग इज ऑब्वियसली टू ब्रिंग योर इंपोर्ट्स डाउन। और अभी देखने की बात यह है कि इस वक्त जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम ने जो दावा किया है कि रूसी तेल की खरीदारी पर कुछ पेशरफ्त हुई है, वो जनवरी में क्या आपको ठोस एक अग्रीमेंट के जरिए ठोस कुछ मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है नहीं। वो फिर वो जनवरी में ये दो चीजें आपको नजर आएंगी, क्या हम इमीडिएट क्राइसिस जो इस वक्त नजर आ रहा है वो उससे निकल जाएंगे। दूसरी मैं दिलचस्प बात, एंड दिस इज एन ओवरहर्ड काइंड ऑफ स्टोरी, I've been traveling back and forth between Islamabad and Pindi for the last couple of weeks, and group of bankers जो बात कर रहे थे, और ये पिछले हफ्ते की बात थी, उससे पहले की हफ्ते की बात है, उनका ख्याल था, और ये दिस गोज बैक टू इसाक डार, वो उनका ख्याल था, वो काफी उनकी तनकीद भी कर रहे थे, एलसीज का भी मामला चल रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि अब नए आर्मी चीफ आ गए हैं, शायद मामलात संभल जाए। लेकिन जो मेरा सेंस इस वक्त ये है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ज्यादा इस वक्त अपनी
जो ट्रूप्स हैं, जो फौज है, उसके अंदर वो दौरे भी कर रहे हैं, सरहद पर भी दौरे कर रहे हैं अपने ट्रूप्स को। जाहिर है एक फेयरवेल टूर की बात होता है, एक वेलकम टूर होता है, मुलाकातें कर रहे हैं, वो अपने अंदरूनी मामलात संभाल रहे हैं, इज इन्वॉल्व इज quiet at the moment, is in listening mode, so is not getting fully involved in these matters. जी बिल्कुल। और वो जो वेलकम टूर होता है उस पे जो हमारे दोस्त हैं वजाद खान, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि छोटा खाना भी होता है, बड़ा खाना भी होता है, उस पे सवाल पूछे जाते हैं चीफ से। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रूप्स, बेसिकली ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एन इनकमिंग आर्मी चीफ। उसके बाद वो इतना एक्सेस नहीं होता। दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, सो ही इज इन्वॉल्व इन दैट। और उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि जनवरी से पहले भी शायद कुछ मालूमात हो जाए, क्योंकि वजीर खारजा जो है वो छुट्टियों से पहले डीसी आ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका आ रहे हैं। तो वो अब 20 तारीख जो है अगले 7-8 दिन में आएंगे, बेसिकली अ वीक बिफोर क्रिसमस। वी विल सी व्हाट द आउटकम ऑफ दैट ट्रिप इज, उससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो लोग छुट्टियों के मोड में हैं, क्रिसमस की हॉलीडेज में। तो आई एम पर्सनली इंट्रीग्ड to see what the foreign minister does when he comes here and what he's able to achieve, given that people are basically checked out for the last half of this month. All right, I mean, I think नाजुक मोड़ जरूर है, और नाजुक मोड़ तो रहेगा शायद, इसलिए हमने पॉडकास्ट का नाम भी यही रखा. But I think we should in the next couple of podcasts talk about what we think is, do some political forecasting, because there's some interesting things coming up. क्योंकि इस वक्त पंजाब की सूरत हाल जो है वही की वही है, जो आपका एक सियासी अदम इस्तेकाम का जो खतरा था, खासतौर पे विफाक पर, वो तो टल गया है. लेकिन कई हफ्ते गुजर चुके हैं, असेंबलियां तहलील नहीं हुई, और इस वक्त काफी ज्यादा पॉलिटिकल रैंगलिंग हो रही है, जो पंजाब की सूरत हाल रही है, जिसमें PMLQ में दोबारा से दोस्ती की भी बात हो रही है. 14 साल की मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ से. आसिफ अली जरदारी साहब भी पंजाब को संभालना चाह रहे हैं, उसी तरह का एक मिरेकल पुल ऑफ करने की कोशिश करें जो उन्होंने अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किया था. सो आई थिंक दोज थिंग्स आर समथिंग टू लुक एट, बट आई फील एज इफ राइट नाउ, आपने छुट्टियों की बात की, सियासत भी पाकिस्तान में ये लो सिमर पे आ चुका है आफ्टर द सॉर्ट ऑफ बॉइलिंग हीट दैट इट वेंट अप टू अंटिल दिसंबर, द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर. सो बैकडोर डीलिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, एंड देयर इज अ बिट ऑफ अ लल. अमर, लगता है वो शादी सीजन भी है, तो वलीमे के खाने पे साइड में मुज़ाकरात होंगे, ये तो होते हैं लोग। ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्रंट न्यूज़, लेकिन क्योंकि सब मिलेंगे एक दूसरे से और मुलाकातें तो चलती रहती हैं ऐसी सोशल, तो शायद उस पर कुछ बैठ के मुज़ाकरात हो जाएं बैक चैनल, और जनवरी में हमें पता चले. लेकिन अंबर, ये एक सवाल मेरा आपसे इस बात पे था, पंजाब के लिहाज से, कि डिसोल्यूशन की बात कही नहीं हुई अभी तक, लेकिन सरप्राइज तो परवेज इलाही ने भी दे दिया इमरान खान साहब को कि उनके MPA PTI के वो वजीर बन गए. और ये बताएं कि ये वैसे बात सच है कि वो वजीर बने और इमरान खान को बताए बगैर वजीर बन गए, और सरप्राइज था ये सबके बात लिए. बिल्कुल काफी काफी जराए जो है इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है, मुझे वो याद आ गया जब इमरान खान साहब ने एक बयान भी दिया था कि मुझे डॉलर के रेट का तभी पता चलता है, मैं टीवी पे देखता हूँ. और इससे यही जाहिर होता है. देखिए, इससे आई वुड से कि एट सम पॉइंट देयर शुड हैव बीन लास्ट स्ट्रॉ फॉर इमरान खान, और ये उनकी मजबूरी नजर आती है. देखिए, खैबर पख्तूनख्वा मेजोरिटी है वहां, उसमें वो तो आसानी से तहलील भी कर सकते थे, लेकिन वहां बैरिस्टर सैफ जो है, उनका भी एक बयान इस तरह का आया कि वहां जो MPAs हैं वो भी नहीं चाह रहे कि इस वक्त फौरन इंतखाबात हो खैबर पख्तूनख्वा में भी, हालांकि वहां स्ट्रांग पोजीशन है. पंजाब में रूलिंग बाय प्रॉक्सी, इमरान खान साहब परवेज इलाही FIR भी नहीं कर पा सके. बयान तो दे दिया तहलील करने का, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, हुक्म का इंतजार भी कर रहे हैं. और फिर आपको ये भी नजर आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि PTI के MP हैं, उनको भी वजीर बना दिया, उनको पता भी नहीं था. सो आई थिंक you can see where things are going. There's obviously the pressure on Imran Khan continues on, again, a very low scale. एक टेरियन वाइट का केस है, which is has always been very unfortunate, कि इसको पर्सनल पॉलिटिक्स में आप डाल दें. वो भी एक मामला अदालत में चला गया है दोबारा से. दैट नेवर रियली गोज अवे. एक मौका होता है. फिर वो एक लीक्स आई थी जुल्फी बुखारी की और बुशरा बीबी की, मुर्शिद वाली, जो that have become very great sort of meme worthy material, but it just shows you obviously that pressure remains.
जी बिल्कुल। तो उस पे हम बात करेंगे पॉलिटिकल फोरकास्टिंग पे, बट जरा पाकिस्तान से बाहर की बात करते हैं। अंबर, देयर टू और थ्री हाँ। बिग स्टोरीज, स्टार्टिंग विद के सदर शी या लीडर ऑफ चाइना शी हम्म। जिनपिंग वाज इन सऊदी अरेबिया, 4 डे मल्टीपल डे ट्रिप, एमबीएस से मुलाकात की। और from a observer of diplomacy and foreign policy, on the outset this was a huge trip, क्योंकि जो उसके स्टेटमेंट आई है 4,000 वर्ड की जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज which is करना, which शो which is no small feat, exactly 4,000 words. मगर आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं वैसे उजैर, वो भी जरा बताना। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट तो वो तो मुलाकातें हुई, काफी पॉजिटिव था, बट आई थिंक देयर वाज इंटरेस्टिंग, यू नो, आई वाज रीडिंग व्हाट सऊदी कमेंटेटर्स इन सऊदी वर टेलिंग द प्रेस, पर्टिकुलरली द वेस्टर्न प्रेस, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अगर हम थोड़ा महीने पहले चले जाएं पीछे, तो सदर जो बाइडेन गए थे और वहाँ एक बड़ा ऑकवर्ड सा, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ यस। जबरदस्ती और वहाँ ऑकवर्ड सा एक फिस्ट बम्प था जो हुआ था। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई रिमेंबर वाशिंगटन में जो सऊदी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब मेरी बात हुई कि जी ट्रिप कैसी गई, तो वो काफी डिसअपॉइंटेड थे इन टर्म्स ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस अप्रोच टू रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। एंड अगेन दिस इज अ डोमेस्टिक इशू इन अमेरिका नाउ, इफ पीपल रिमेंबर, शायद आपको याद हो कि जब सदर बाइडेन कैंडिडेट थे और डिबेट्स चल रहे थे तो उनसे पूछा गया सऊदी अरब के बारे में, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए सऊदी अरब के बारे में पब्लिकली इन दैट डिबेट, अगेन यस। फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी में since the heinous murder of Jamal Khashoggi, एक perspective रहा है कि जी Saudi Arabia is not an ally and we should hold them to account for what they did and their brutality, etc. Meanwhile, the Saudis are like, we're reforming, we're trying to change, you should look at us differently. तो वो एक कोल्ड जो है ना रिलेशनशिप हो गई, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अभी भी है, बट इट वाज कोल्ड। and then there was some outreach done, there was this apparently an agreement ke Saudi Arab will cut or increase oil production to cut oil prices, lekin they did the reverse with OPEC plus, uske baad यस। ek pura relationship mein darar aa gayi thi aur ab sadar Xi Jinping iska advantage lete hue Saudi Arab pahunch gaye और 4,000 वर्ड्स का एक स्टेटमेंट भी जारी किया, एंड आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ प्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो अनाउंस भी हुई हैं, हुआवे इज वन ऑफ देम। जाहिर है कि बरतानिया में, अमेरिका में टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी पर काफी मशकूक नजर से देखा जाता है कि इट इज बी यूज्ड फॉर स्पाइंग फॉर इंस्टेंस in terms of 5G. So I think this is obviously significant. Just as a contrast, and I will say that from my perspective, what also tells you that जो अमेरिका पहले था, जिसका असर और सूख आपको नजर आता था कि अमेरिका अगर किसी को सजा देना चाहता था तो वो सख्ती से सजा दे पाता था, उनको आउटकास्ट बना देता था। लेकिन यहाँ कुछ आपको मईशत की मजबूरी भी नजर आती है, जाहिर है तेल की कीमतें और रूस और यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से। लेकिन आई वुड से इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स अ लिटिल बिट ऑन द यूएसएस inability to follow through on its position, at least on human rights abuses, as well as that it will hold Saudi Arabia to account on because of Jamal Khashoggi's murder. या ऑफ कोर्स, एंड इट्स लिंक टू अगेन, एक तरफ सिक्योरिटी इशू है, वो ये कि सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी या उस रीजन की, खत्ते की नेशनल सिक्योरिटी इज बैकस्टॉप पर्टिकुलरली अगेंस्ट ईरान थ्रू अ यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। उसमें इसराइल भी शामिल है, अब उनकी दोस्ती हो गई है अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद, तो एक वो एलिमेंट है। दूसरा चेंजिंग एलिमेंट अंबर इसके अंदर ये है कि चाइना का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक पावर हैज मेड चाइना नाउ द लार्जेस्ट बायर ऑफ सऊदी ऑयल। तो इस पे चाइनीज ने भी इस बात पे बात की कि अगर हम आपका इतना तेल खरीद रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शंस आप युआन में करें और थ्रू द शंघाई ऑयल एक्सचेंज करें। सऊदी कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि दिस इज वेयर इट इज ट्रेंडिंग, बट ऐसा नहीं है कि कल से जो है हम डॉलर अबैंडन करके युआन की तरफ चले जाएं इसकी तिजारत में। बट ये एक पॉइंट है चाइनीज का कि अगर हम एक दूसरे से खरीदारी कर रहे हैं, आपका तेल हम खरीद रहे हैं, आप हमारी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो why do we need to rely on the petrodollar, for example? So that's a big interesting conversation worth following. And I think, and I would like to sort of ask you about this. I mean, हमने बात की, मेरा जो इस वक्त इस पे जो नुक्ता नजर है कि I think it shows US is declining power abroad as well, but I think it's also linked to the declining value of the dollar. Don't you think? Because obviously the Russians have also, the reliance on the dollar is something that, for instance, इनके जो भारत के साथ जो तिजारत है तेल पर, वो भी डॉलर के जरिए तो नहीं है। फिर इसके अलावा भी चीन का आप देख रहे हैं। इसमें आपको लगता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे पाकिस्तान की हैं, जिनकी डॉलर की वैल्यू, अभी हमने उस पर शुरू में ही बात की थी, सो डिपेंडेंट
this could be of advantage to third world countries, no? No, Amber, I disagree कि it's evidence Okay. of the declining value of the dollar because again I पिछले mean, could it be, what I'm trying to say is, does it mean that it could be the start? No, I disagree. I don't think so. And I'll explain Okay. why. Because even अगर आप देखें रूस की जंग के बाद रशियंस जो छोड़ के गए रूस दुबई आ गए majority of them came to Dubai or significant chunk of them उनकी ट्रांजैक्शन सारी दुबई में डॉलर्स के अंदर होती हैं वो प्रॉपर्टी Okay. खरीदते हैं वगैरह राइट इसी तरह चाइना के अंदर जो चाइनीज हैं द रिच चाइनीज दैट व्हेन यू नो दे आर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन लंदन न्यूयॉर्क वैंकूवर वगैरह these are all dollar denominated transactions. They flee to the haven of the dollar and flee to the haven of the economies of the West and countries and economies aligned to the United States. उसकी वजह ये है क्योंकि even in this whole emerging multipolar world, Western economies, in particular the US, offer you the most security in terms of your property and in terms of your assets. तो अगर आप वैंकूवर की लोगों से बात करें या उनके इंटरव्यूज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पढ़ें तो वो कहते हैं हमारे यहाँ महंगाई हो रही है हाउसिंग के अंदर क्योंकि चाइनीज पैसा आ रहा है न्यूयॉर्क में इसी तरह जो स्काई हाई रेंट्स हैं इस वक्त या स्काई हाई वैल्यूएशंस है उसका एक बड़ा ड्राइवर जो है वो चाइनीज बायर्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं जो खरीद के रख देते हैं जैसे पाकिस्तानी प्लॉट लेके रख देते हैं वो अपार्टमेंट या घर लेके रख देते हैं ताकि कभी उनको भागना पड़े चीन से तो यहाँ आके वो ठहर जाएं या आके यहाँ समर की या सर्दियों की छुट्टियां गुजारते हैं फॉर एग्जांपल या उनके लंदन में भी आप रशियन ओलिगार्क्स एंड रियल एस्टेट सो रियल एस्टेट हम पाकिस्तान में तो कहते हैं रियल एस्टेट इज बिग ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जैक्टली तो ये एक मलिक रियाज हर जगह पाए जाते हैं मलिक रियाज हर जगह पाए जाते हैं और प्रीव्यू हमारी अगली जर्मनी की स्टोरी का उस पर भी आते हैं वहां भी एक लिंक है मलिक रियाज टाइप का लेकिन सो दैट्स आई थिंक व्हाई आई थिंक इतना ज्यादा नहीं है और ये सऊदी एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन बट इट्स नॉट लाइक हम पेट्रो डॉलर को कहीं छोड़ने वाले हैं बिकॉज स्टिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू अस जो सबसे एक तीसरी बड़ी चीज आई थिंक डॉलर से ज्यादा और इस ट्रेड से ज्यादा जो उस स्टेटमेंट्स के अंदर या इस ट्रिप के बाद बात की गई है वो पॉलिसी है ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ये एक सऊदी यूएस का और वेस्ट के साथ एक टेंशन रहा है कि जी आप हमारे साथ ताल्लुकात रखें लेकिन हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर आप पब्लिकली कमेंट ना करें प्राइवेटली आप बात कर सकते हैं विच इज द चाइनीज स्ट्रेटजी राइट कि वो कहते हैं आप शिंजियांग से हमसे बात करनी है तो प्राइवेटली करें वगैरह वगैरह तो सऊदी and भी यही particularly कह रहे हैं that support is important in multilateral forums like the UN. एग्जैक्टली और यही एक तरह से पॉस्चर फॉर एग्जांपल भारत का रहा है कि जी अमेरिका के साथ के हमारे जो हैं इख्तलाफात कुछ चीज़ों पे हैं इसके अंदर ह्यूमन राइट्स है माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट है आप उसको पब्लिकली इतनी ज़्यादा बात ना करें स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू इसी तरह सऊदीज़ का भी यही पर्सपेक्टिव है और चाइनीज़ का भी यही पर्सपेक्टिव है तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि एक अलाइनमेंट है अथॉरिटेरियन रेजीम्स की कि जी हम सब अंदर में अपने लोगों से जो करते हैं आप उसको उस पर ना करें एक तिजारत करें इन्वेस्टमेंट करें और स्ट्रेटेजिक लेवल पे ताल्लुकात बढ़ाएं और इस पे अमेरिका भी यही करता है ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कोई पिछले दिहाइयों के अंदर चिले के अंदर या वेनेजुएला के अंदर या कहीं और जहां अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट थी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स पे बात की हमेशा नहीं की जब अलाइनमेंट होती है जियाउल हक के साथ जब अलाइनमेंट होती है पिनोशे के साथ जब अलाइनमेंट होती है सुहार्तो के साथ तो ये बातें नहीं की जाती ये दोहरा मेयार तो जाहिर है फॉरेन पॉलिसी में तो रहता है एंड आई थिंक it also reflects again as I said कि मईशत की मजबूरियां तो होती हैं चाहे ईरान हो वेनेजुएला हो उसके साथ सऊदी अरेबिया बड़ी मिसाल है तेल के हवाले से उसके साथ भी कुछ ताल्लुकात और डीलिंग्स जो अमेरिका करना चाहता है वो इसी की अक्कासी करता है बिल्कुल और इस पे आखिरी बात उसके बाद हम जर्मनी की तरफ देखते हैं कि हमारे यहाँ बात हो रही थी कि सऊदी 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाएंगे ग्वादर के अंदर काफी सालों से ये बात हो रही है लेकिन वो लग के नहीं दे रही तो सऊदियों ने एज पार्ट अर्लियर इन द रन अप टू दिस ट्रिप एक 10 बिलियन डॉलर की डील की है नॉर्थ ईस्ट चाइना में जहां वो अरामको जो है वो एक रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी लगाएगी तो ये भी एक सिनर्जी है जहां सऊदी इंडिया for example, on oil refinery side, Aramco is investing in in Indian oil companies on the refining side, because it's a growing market. Similarly, they're investing in China, and the Chinese are saying, you want 5G technology, you may also want surveillance technology of the type that we have. तो ये एक interesting trend है हमारे खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के खित्ते के अंदर, जहाँ चीन, सऊदी अरब, इंडिया और दीगर ममालिक जो हैं वो एक तरह से मनूवर कर रहे हैं ऑन हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप
while also maintaining decent ties with America, which has been a historic partner for at least countries like Saudi Arabia and the UAE. And it's really about finding that balance as well. I mean, and then my last comment on this, it also sort of tells you it isn't as if the Saudis and the Chinese are not interested in investing in Pakistan. They are. They don't see this as a country where they can find the political stability to protect their commercial interests. And that's something that concerns a lot of policymakers in Islamabad and Rawalpindi as well. Yes, and I think on that note, like I think Americans, Europeans, Saudis, Chinese, everybody agrees on Pakistan that if you were to be a bit more stable and give a bit more certainty, then investment would happen in your country. But for that, you first need to get your own house in order and stop bickering and fighting the way you do. Amber, the second story we were talking about, Germany coup attempt. Yes. क्या हुआ बताइए जरा. Well, okay. So यहाँ कुछ दो दिन पहले भी there is a small princely state उनका represent करता है, far right group के साथ उनके ताल्लुकात है, Prince Heinrich. And there's such a German name as well. And Prince Heinrich and a group of far right, जिनके ताल्लुकात QAnon के साथ भी है. QAnon obviously came into the limelight because of the January 6th insurrection. मगर दिलचस्प बात ये है कि ये जो German far right group है, इनकी they're well entrenched also within the armed forces and police. And then you see that a series of arrests and raids and they've arrested something like 54 people. This coup attempt was actually again a part of it's actually a sort of post-World War II movement where Germany's far-right groups have obviously been pushed aside. They've also gotten some electoral success as well, but it also tells you these global connections. And it also tells you about, I think, जो मुझे मजेदार बात लगी, हम बार बार समझते हैं कि हम पाकिस्तान ही या साउथ एशिया ही जो है बास्केट केस है, लेकिन जब आप बरतानिया से मवाजना करते हैं जहाँ political instability, cost of living crisis वहाँ भी बहुत शदीद है, मईशत का भी बुरा हाल है, और दूसरी तरफ एक जर्मनी है जिसको आप again you think of it as politically stable, but as far as I understand, and you told me this is not the first time that this group has attempted a coup. Yes, and उसके लिए there's a must listen podcast for those of you tuning in. मैंने उसका link नीचे डाल दिया. It's called Day X by the New York Times. I listened to it last year and it's fascinating क्योंकि वहाँ कुछ साल पहले, I'm forgetting the exact year, एक plot था इसी group का कि हम airport के अंदर German politicians को assassinate करेंगे and we will claim कि ये assassination radical Islamist Syrians ने की है. और उसके बाद उनका प्लान था कि हम एक आएंगे बर्लिन के अंदर और हुकूमत तब्दील करेंगे, इमरजेंसी लगवाएंगे और we will take over Germany and convert it into a white supremacist, neo-Nazi, whatever their ideology is. And as you said, ये globally linked है. तो उसका ताने बाने QAnon अमेरिका में मिलते हैं, इनकी रिलेशनशिप्स हैं फ्रांस के फार राइट के साथ, इटली के फार राइट के साथ, हंगरी के फार राइट एलिमेंट्स के साथ. तो एक ग्लोबली कनेक्टेड मूवमेंट है. इनफैक्ट over the last 2-3 years, Amber, just on the US side of this, if you read the Department of Homeland Security's assessments, they say that far-right white supremacism is actually a far bigger danger than Islamic radicalism at this point. Yes, I actually did see those documents. And इस बार इनकी कोशिश ये थी, इनका जो इरादा ये था कि जो German Parliament है उसको storm करेंगे. Maybe they're hoping for another sort of Kristallnacht or Night of the Crystals. Exactly. And इनको पकड़ लेंगे जो इनके members of parliament भी हैं. Heinrich, he is a descendant of the royal house of Deutz, and I'm just reading this as well. And this is on the East Germany, which makes sense obviously because you have a lot of far right groups over there as well. And the connection जो हमने कहा था कि मलिक रियाज की बात कर रहे थे, he's a real estate developer. जी, तो उनकी सोच थी कि DHAs बनाए जाएंगे कहीं ना कहीं. ये नहीं सोचा कि बस DHA बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पूरी रियासत उस पे काबू कर ले, पूरा मुल्क आपका एक DHA होगा. बिल्कुल. और उसके अंदर एक आखिरी बात ये कि स्टोरी का अगेन जो शुरुआत हुई डे एक्स वाली इंस्टेंस के साथ, कि उस वक्त मालूम ये हुआ कि जर्मनी की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनफैक्ट इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका मैंडेट है कि वो नियो नाजीज पे नजर रखे और ये वापस ना हो,
उसको उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था, पुलिस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी थी, और फिर रिफॉर्म्स किए गए जर्मनी के अंदर, डिसबैंडमेंट की गई यूनिट्स की, एक तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट कोट अनकोट किया गया, लेकिन अब लेकिन मालूम हुआ सॉफ्टवेयर है कि अपडेट हुआ तो नहीं नहीं सही हुआ ना, तरह, कि नहीं दूसरा हुआ दूसरा कू अटेम्प्ट हुआ तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, जी because those, even though this came, the coup news of the coup attempt came from the intelligence, German intelligence, लेकिन अभी भी उनके लोग जो हैं वो entrenched थे, the infiltration remained. जी। But anyway, we should move on from Germany. जर्मनी Maybe से not आगे as close जाते to हैं, Japan, but भारत according to जाते Imran हैं, Khan. भारत जाते हैं। भारत हाँ. में इलेक्शंस हुए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के म्यूनिसिपल इलेक्शंस। तो मेरे दोस्त हैं अदनान अंसारी, दिल्ली में रहते हैं। मेरी तरह जो है वो, मैं पाकिस्तान की अगर सियासत पे कड़ी नज़र रखता हूं, तो वो मेरे से ज़्यादा भारत की सियासत पे कड़ी नज़र रखते हैं। तो पहले तो उनका इंटरव्यू सुनिए कि उनका क्या तज्जिया था और उन्होंने क्या मालूमात शेयर की। Adnan, thank you for joining Nazuk More. Excited to hear your assessment and analysis on the Gujarat and Himachal elections and what it means. So first, like, tell the audience what exactly happened. So from the headlines, we know that Gujarat, seventh successive win for the BJP, basically undefeatable as a party. Himachal Congress won. So is this the end of the Congress? Is this the BJP emerging as the one party leader in India? Like, what's going on? Right. I mean, first of all, I think never say never is something that is applicable to politics always. So, I don't think we can talk in extremes, but very interesting results thrown by the recent elections. So let me tell you, first of all, three elections were happening in India, not two. So Gujarat, of course, which everybody's talking about. Then there was Himachal Pradesh, which is a smaller hilly state in north of India. That's where elections were happening. And then a very small municipal elections were happening in Delhi, the MCD elections, where it became important because the political parties made it very important, even though it was for urban local bodies. And there again, AAP and BJP. So coming to the results, of course, in Gujarat, BJP had a landslide victory and it won 156 seats out of 182, and Congress was basically relegated to 17 seats, and AAP, which was a new entrant, gained 5 seats. In Himachal, the BJP, which was in power, lost to Congress, and Congress won 40 seats, and the BJP won 25 seats. And in Delhi elections, which again was held, the MCD elections, which were held by the BJP for the past 15 years, AAP won and BJP came second, and Congress came a distant third. Now, sorry. So No, let me. I was just really Sorry. quickly on this. So AAP was a new entrant in Gujarat, just for the audience. They've been incumbents in Delhi, right? Yes. And sort of have been present on the ground over there. And then obviously, as you said, Himachal anti-incumbency BJP lost. So that's also interesting to me as an outside observer, and I'm sure to the audience, that no anti-incumbency in Gujarat, anti-incumbency in Himachal, and also no anti-incumbency in Delhi. Yeah. So no, in anti-incumbency in Delhi actually, which is why AAP won over BJP, because MCD was held, the municipal corporations of Delhi, they were held by the BJP for the past 15 years. So it's very, see, anti-incumbency is definitely a factor in all elections, but they are not the only factor. And in fact, in the Gujarat elections are very interesting because AAP actually won. So, because let's not just look at the seats, let's look at the vote percentages. The BJP cornered 53% of the vote, which is higher than what it had in 2017, but significantly lower than what it had in national elections of 2019. But again, we know that in India, people vote differently in national elections versus state elections, but still higher, 4% higher than 2017 elections. Congress, which actually won only 17 seats, still managed to win 28% of the votes. And AAP, which won only 5 seats, got 13% of the vote. So frankly, this is a clear division of votes that has happened, which is why the Congress has been, is down now to 17 seats. This doesn't say that if AAP was not there, Congress would have won. They still had significant ground to cover. But that is something that we are seeing, that this division of vote has happened, and which is why you see this landslide victory.
And just on this, just for the audience, you and I obviously talk about this offline a lot. It's the beauty or the tragedy of the first past the post system, right? Like a little bit here and there can turn a landslide into a shocking defeat. Absolutely, absolutely. And which is why, I mean, the contrast is very clear of the first past the post system, where the Congress won 40 seats and the BJP won 25. The difference in vote share there between the two parties is only 0.9%. The Congress cornered 43.9% of the votes and the BJP cornered 43% of the votes. Last time around, when the tables were turned where BJP had won, the difference between the two parties was 7% of the vote. So clearly, there is some good election management that has happened in Himachal, which is why the Congress has been able to sort of gain a significant majority. I mean, when we are looking at the number of seats involved. So that is what is interesting. So yes, you're right. I mean, the first past the post system, this is what it throws up, and very clearly it has thrown two very different results in Gujarat and Himachal Pradesh. So help us understand this. I've seen in the news coverage of this as well. Like, is this BJP being super popular, or is this Modi being even more popular than he ever has been, which is a problem for the BJP because ultimately Modi has to move on? How do you see this? Why is the BJP, for example, in Gujarat so dominant? Is it about them wooing minorities, which we've read articles about? Is it about the double engine sarkar, as they call it, with the schemes rollout, etc.? What are the top 2 or 3 reasons why they've become so dominant in a place like Gujarat? So Uzair, I mean, especially, and it's very important to juxtapose these 22 Gujarat elections. Let's take Gujarat first versus the 2017 Gujarat elections. A number of things have changed since then, and the 2017 elections, in some ways, they were actually an exception to the norm, because the Congress actually came quite close in the 2017 elections, and a number of things were happening at that time. First of all, it was still the first term of the Modi government. Secondly, your GST and demonetization had happened. So even though we can say the general narrative has been that, of course, it has not really affected BJP's electoral prospects. But frankly, these were still very recent when the 2017 elections happened. And that led to a very close cornered fight. And in the contextual part, for just the Pakistani audience listening here, the GST rollout is almost like the PMLN in Pakistan rolling out a sales tax reform, forcing retailers to pay taxes and then expecting them to vote for you. That's basically what happened with the GST rollout. And on top of it, they took away people's cash. Yeah. So that was happening. And the other thing, I think, which I don't think a lot of people in popular media are talking about, one of Congress's most powerful politicians and leaders, his name was Ahmed Bhai Patel. He came from Gujarat. He passed away during COVID. And he primarily, I mean, I do think that what we are seeing in Gujarat is a leadership crisis for the Congress, and which is why AAP, which came into the picture, was able to corner 13% of the votes. And then the fact that, I mean, it's been talked about that even Rahul Gandhi, he was not almost present in Gujarat. So frankly, and that almost showed also really in terms of, because one of the other interesting things that I thought about these elections, the voter turnout actually fell in Gujarat by 4%. And this is something that goes against the trend in India, where voter percentage has been increasing every election. So almost like a fatigue setting in, and then a leadership not present, and then really a lot of the people, because even if they want to vote, they went ahead and voted for the BJP. Now, but of course, Prime Minister Modi, he remains extremely popular. He sort of was present there throughout the elections, and this double engine sarkar and his own sort of relationship with Gujarat does play into this quite a lot, and which is why you saw BJP winning such a huge margin. But again, there are other these smaller factors at play. And of course, I mean, really, I mean, when I sort of try to see the elections, I also see BJP's cadre is unmatchable. Really, and Gujarat, you see the power of that cadre, which again was at display. Then really in terms of even the money, so that has been spoken about quite a lot. I mean, BJP sort of is a much richer party than any other opposition parties, and that sort of is a very important factor in terms of how electoral results you see, because
I mean, and the percentage is huge. I mean, we are talking about almost 1/10 or maybe even lower, that the opposition parties, the money that they are getting, and that sort of is a very important factor in these elections. And Gujarat, all of these factors came together, and then an opposition party, and then an oppositional leadership crisis. I mean, there is no leader in Gujarat that Congress can now sort of make its own. I mean, there were two young leaders, Alpesh Thakur and Hardik Patel, who came from protests politics. I mean, there were a lot of protests also in Gujarat, which led to a lot of the 2017 elections, the fortunes of the BJP and the Congress. But both those leaders, Alpesh Thakur and Hardik Patel, have now moved on to the BJP. So there is Jignesh Mewani, who's a local leader, a Dalit leader. He won his constituency, but then again, there is a foundational leadership crisis in the Congress, not just at the central level, but also especially at the state level, and especially with Ahmed Bhai Patel gone now. So that is what you see here. The other thing we've heard about, obviously, is, a change of tone, for example, from the RSS, a change of tone in terms of the BJP trying to outreach to the Dalits or the Pasmanda Muslims, talking about everybody gets the schemes, everybody benefits through our strategy of, Sabka Saath, Sabka Vikas, etc. What do you make of this? Like, is this something from your vantage point, following Indian politics, is a evolution in the BJP, or is this again just a narrative to give a softer touch to what is basically a party that relies on the Hindu vote bank to win votes? So, Uzair, very interesting point. So first of all, I mean, let's break it down into two parts. One, the Dalit question, and then the Muslim question. So first of all, the Dalit question. On that, I mean, I do think that BJP has been building this rainbow coalition for many years now. And in fact, the BJP has more Dalit MPs in the parliament than any other party. I mean, out of the, I think if my memory serves me right, out of 131 reserved constituencies that are there, BJP has some 77 MPs or 72 MPs. So again, BJP has a significant sort of following with the Dalit population, and that is not just a result of welfare schemes, but also its social campaign, where it has reached out to Dalits over the years. Then coming to the social campaigns, and this is a very important point, this is something that a lot of people do not understand, that core to BJP's ideology is an ideology of its different ideologues, and one of the ideologues is Pandit Deen Dayal Upadhyay, who gave this slogan of Antyodaya. And BJP actually has tried to implement that. Antyodaya means that you work for the last person in the line and the last person, the marginalized. And they have sort of tried with a lot of social schemes, whether it's free ration, whether it's housing schemes, whether it's toilets. So that is something that has happened. And to be fair and to be honest, these schemes have reached a number of people. I mean, and despite whatever their despite whatever their religious or caste backgrounds are. So again, these schemes have reached Muslims, these schemes have reached Dalits. The percentages may vary. I mean, I don't think anybody can actually put down that number. But frankly, these schemes have happened, and the especially during COVID lockdown, the election, the free ration that reached a number of people. I mean, it was absolutely crazy. I mean, the scale of which with which that happened. So then now coming to BJP now has started something very interesting, reaching out to the Pasmanda Muslims, which is the OBC Muslims in the country. And they roughly, I mean, again, India doesn't have a caste census, but a lot of people estimates suggest that 85% of India's Muslims you could potentially qualify as Pasmanda Muslims. But if you actually look at, again, I don't have the hardcore data, but again, the politics of Muslims is cornered by upper caste Muslims. So it's the upper caste Muslims who are usually in power. So definitely, I mean, BJP has seen that lacune and it is reaching out. Data seems to suggest it hasn't worked, at least now. We have very few data because BJP does not field many Muslim candidates, but it did field 4 Muslim candidates in the MCD elections, the Delhi MCD elections, and frankly, all 4 of them lost quite badly. But the outreach continues. The outreach by all accounts comes directly from the Prime Minister, who talked about it in the Hyderabad meeting of the BJP General Council. So
we will see how that plays out. It is frankly too early to say, but definitely, I mean, BJP as a party is always sort of looking to improve its tally. And one of the things that they've seen, that seats that they did not win last time around, how do they win it this time around? And Pasmanda Muslims is an important factor. There were a couple of MP seats which were quite, I mean, where there was a significant Muslim population in UP, so, and BJP win the by-polls in those, but it's very hard to say whether or not Muslims voted for the BJP en masse. It's very hard to say, but again, it's an outreach that is happening, and frankly, if the BJP is prioritizing it, we can never discount it, and we can never say that it may not succeed. Yeah, that's one thing with the BJP, is that their electoral strategy, whether it's money or the fact that people like Amit Shah actually invest the time on the ground, it's just phenomenal from a political strategy point of view as well. And they have work to show. Frankly, I mean, the schemes that you're talking about, a lot of those schemes are working. I mean, there is of course criticism that a lot of schemes for Muslims, really in terms of the education, etc., have been rolled back. But again, they have been replaced by these schemes which are for all, and they are reaching the Muslims. So yeah, I mean, you will see both the sides in the media, but again, it's kind of in the middle, to be honest. Last question for you. Obviously, this was a litmus test for 2024. Rahul Gandhi is on the Bharat Jodo Yatra, has a thicker beard than you and I these days. Some controversial remarks over that as well. But then Narendra Modi also has a beard and is also perhaps considering running again, even though I think he will be reaching the age limit, which he himself set. So what do you see if you look at the road to 2024? Where do things go? Does Prime Minister Modi run again as the most popular, by far the most popular politician in India? And does Rahul Gandhi's Congress stand a chance against the juggernaut that Amit Shah and Narendra Modi have built? Yeah, I mean, so frankly, Uzair, if you ask me, really, I want to start actually by the first of all, chances of the BJP. Frankly, I mean, I think anybody can say that it is highly implausible that the BJP will lose the 2024 elections, but of course, it is not impossible. In politics, nothing is impossible. And over there, I mean, the thing is, for the BJP right now, if you actually look at all the so-called heir apparents for Modi, frankly, nobody is big enough or popular enough to replace Prime Minister Modi right now. So my sense is that he will be a little less than 74 when the 2024 elections happen. So technically, he'll of course not be past the deadline, past the sort of limit that he has, the threshold that he has set. That's kind of like how Pakistan chose its new army chief, with the technicality right at the very end that he barely qualifies. Yeah, but again, that line is of course also not written in stone. And then really, in terms of the popularity where the BJP is, and Prime Minister Modi, of course, would also want to build a legacy for himself. I mean, winning 3 general elections, I don't think apart from Jawaharlal Nehru, anybody did that consecutively. I mean, of course, Indira Gandhi, of course, won, but consecutively winning 3 elections is kind of a big deal. And where Prime Minister Modi sits right now, I do think that is something. It's very hard to let go of that title, I mean, frankly. And secondly, in terms of, I mean, just speaking electorally, it makes a lot of sense for him to continue. So it's it's almost impossible now. I would say that he would not contest in 2024. Now, coming to the chances of the BJP. So again, as I said, I mean, it's highly implausible, because the way that the BJP sort of has been approaching elections, the electoral machine, whether it's the money, whether it's the media, whether it's popularity of Modi himself. I mean, the kind of ratings that he has, any global leader would die for those ratings. Would die for those ratings. So all of it combined, it's highly unlikely that the BJP will be unseated. But I think all of us go back to the 2004 elections, where Atal Bihari Vajpayee was a very popular prime minister at that time. And he, of course, he did not have the majority that PM Modi commands. But again, they did lose an election. And when I was thinking about it, a very interesting memory sort of came to my mind. In 2004 elections, BJP used to attack the opposition before the elections happened with this
old sort of Hindi simile, Hindi muhavra, ek anar saw bimar, because so many people were so many political leaders from the opposition were vying for that prime minister's post, and they were all coming together into this huge rainbow coalition. But frankly, those saw bimar only defeated Mr. Vajpayee. So coming to 2024, I think that's the best strategy. I mean, it's not just one election. It's every constituency, every MP constituency will have a different election. So how especially the opposition now rallies up, and we have seen that in Gujarat, how two opposition parties have cornered so much of vote share, but so little, so few seats amongst them. So that is going to be very critical, whether or not they're able to come up to the mark of the BJP. I mean, only time will tell. So let us see. I mean, I think all fingers crossed in terms of it. It's shaping up to be a good battle. And of course, coming but lastly to Mr. Rahul Gandhi, I do think that if you actually look at the Bharat Jodo Yatra path, it actually did not cross Gujarat or Himachal. He did not spend so much time. He is building for 2024 elections, and he did spend a lot of time in states where either Congress was already quite well placed or is in a good position to actually challenge the BJP. So that's how the path was also. That's how his electoral campaigning is happening. So it's shaping up to be a good sort of run up to 2024 elections, and let's see. Yeah. Well, as always, exciting times in Indian politics. Lots going on, lots of regional nuances. Thank you so much, Adnan, for helping us decipher what these results mean. Appreciate your insights, and we'll perhaps have you on again as the general elections draw near in India. Thank you. Absolutely. No, thank you for having me, and look forward. तो अंबर, ये इंटरव्यू मैंने किया और मैं जो है इस पे फोकस भी कर रहा था और करता रहता हूँ बिकॉज ऑफ सम वर्क दैट आई डू रिलेटेड टू इंडिया. तो एक फैसिनेटिंग चीज है कि 7th टाइम गुजरात के अंदर बीजेपी ने स्वीप किया है. मतलब सिर्फ जीता नहीं है, स्वीप किया है इलेक्शन को. आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? I mean, this doesn't. I think Gujarat has been a source of power for the BJP and Modi in particular. So I think what should surprise us is it is the 7th time. I think what should worry us is that there's no challenge to Modi, and I'd like sort of your take on that as well. जी, उसके अंदर अब गुजरात में अदनान ने भी ये बात की, and I agree with him, कि एक लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस का नेशनली जो कि चलता जा रहा है. राहुल गांधी एके पप्पू जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं. अब उन्होंने दाढ़ी उगा दी है तो वो इट्स अ रीलॉन्च ऑफ अ रीलॉन्च. लेकिन कैन यू नो पैकेज द सेम गुड इन अ डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन? डज इट वर्क? नॉट रियली. बट गुजरात के लेवल पे भी कांग्रेस के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस है और वो नजर आया because they actually did very poorly. But there is an emerging contender to the BJP emerging nationally, trying to at least emerge nationally, which is the Aam Aadmi Party. उन्होंने 13% वोट लिए इस दफा. और अदनान ने मुझे ये बात बताई बाद में भी कि एक इंडिया में एक पुराने लीडर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनकी एक किताब में उन्होंने कहा था कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो पहला चुनाव जो है वो हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है. तो उस पे वो उनका इट्स अ लॉन्ग गेम. तो ये जो चुनाव था आम आदमी पार्टी ने जो लड़ा गुजरात के अंदर, वो हराने के लिए लड़ा. हराया किसको? बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को, कि हम आ गए हैं और अगले इलेक्शन में अब हम डोमिनेंट जो है इस पार्टी में, इस स्टेट के अंदर हम डोमिनेंट वॉइस होंगे. तो ये तो गुजरात का सेटअप है. एक और इंटरेस्टिंग बात अंबर इसके अंदर ये है कि द गैप बिटवीन द पॉपुलैरिटी ऑफ द बीजेपी एंड द गैप बिटवीन द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो, which is a concern from what I've heard among people who watch Indian politics, in particular the BJP, कि नरेंद्र मोदी अब रन करेंगे probably 2024 में for a 3rd time prime minister, and he's likely to run again. But जो उनका leadership crisis है, second tier leadership, so there's no bar on him running. Sorry, I'm going to interrupt you. There's no bar on him running for another term. Well, there is technically a bar, and again we will see how they maneuver around it. ये आसिम मुनीर टाइप analogy बनती है एक तरह से. वो ये कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में इमर्ज किए एज प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर, तो टू क्लीन आउट द ओल्ड गार्ड एक लिमिट लगाई गई एज की, कि आप अगर उस एज से ज्यादा हैं तो आपने रिटायरमेंट होनी है, आप बीजेपी का हिस्सा नहीं रह सकते. तो वो जो पुराना गार्ड था अडवाणी टाइप का, वो क्लियर आउट किया नरेंद्र मोदी ने.
अब ये है कि 2024 में जब चुनाव का माहौल होगा तो he will be, I think, within a few weeks of that retirement. I don't know the exact dates, but it is going to be close to his retirement age, either right before election or right after election. He would have crossed that threshold. Okay. तो he may be technically eligible to run again क्योंकि उनकी एज हिट लिमिट नहीं होगी और वो फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो क्या उनको रिटायर किया जा सकता है? Probably not, but I think he will run. And the reason why I say he will run is that अंबर, अगर हम भारत की सियासत देखें तो 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आए हैं. मनमोहन सिंह वाज अ 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर, राइट? 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक शख्स रहा है, जवाहरलाल नेहरू. 3 consecutive times. तो अगर हम बीजेपी की आइडियोलॉजी देखें, उनका कॉन्फ्लिक्ट विद कांग्रेस देखें, हिस्ट्री देखें, तारीख देखें भारत की, तो it is quite evident that Narendra Modi is going to want to own that legacy of being the only prime minister to win 3 elections in a row as prime minister after Jawaharlal Nehru. This is part of Project New India, Project BJP's India, and I think he will run. And if they need to change the BJP laws for that, then so be it. He will change it. And in fact, there's one more thing. He will change it, but I will say it also has, it's not just Asim Munir. If you remember, जब नवाज शरीफ ही वापस आए थे मुशर्रफ के दौर के बाद 2007-8 में, तो उस वक्त भी कानून बदला गया था ताकि मियां नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बन जाए. So it isn't just about the army. I think I think it'll be interesting to see because अब दोबारा से वो खबरें गर्म हो रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं. Who the prime ministerial candidate will be and what they will need to do is to me is also interesting. Yeah, and just to be clear on this one, in the India sense, पाकिस्तान में तो वो मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कानून तब्दील किया था. ये बीजेपी का कानून है, पार्टी का कानून है. भारत का कोई ऐसा कानून नहीं है जो उनको प्रिवेंट करता है रन करने के लिए. तो और पार्टी के अंदर भी ये बात कही जा रही है कि आप मोदी को लड़ाएं, not only because he's popular, but the second most popular candidate after him is Yogi Adityanath. Or even for the BJP, parts of the BJP, that is unpalatable. That is too much. That is going far too on the right, right? Yes. So it will be interesting to see in the run up to 2024 क्या होता है. But where in Gujarat, जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अफेक्ट नहीं किया गुजरात में बीजेपी को, हिमाचल में it did affect them. हिमाचल में कांग्रेस जीती, but people are saying don't read too much into this. It was anti-incumbency and a localized election. और म्यूनिसिपल दिल्ली के इलेक्शंस में वहां भी आम आदमी पार्टी जीती. Again, anti-incumbency was a factor over there as well. Okay, I mean, these are interesting, and I did see a couple of memes where I think everybody, and you speak of these 3 parties, Aam Aadmi is a potential challenger, Congress trying to resurrect its fortunes, BJP winning in Gujarat. So everybody got a little bit of something to take to their voter, to boost morale, to, going forward, no? Absolutely, but the clear winner out of this is the BJP. उनकी confidence आया in the run up to 2024 that nobody can compete with us, and there is a recognition in the opposition now as well that the only way to compete with Narendra Modi and his BJP electoral juggernaut, Amit Shah's electoral juggernaut, he's the manager in charge of the electoral side of the BJP, is to have regionalized elections, have to have regional alliances, have to agree to run joint candidates. क्योंकि अगर कांग्रेस का और आपका हम वोट स्प्लिट भी देखें गुजरात के अंदर, जो अदनान ने एक्सप्लेन किया अपने इंटरव्यू के अंदर भी, वो ये है कि उन्होंने एक दूसरे का वोट एक तरह से काटा. तो अगर वो जॉइंट कैंडिडेट्स रन करते तो शायद थोड़ी ज्यादा सीटें मिल सकती थी, जरूरी नहीं है. बट अ लॉट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, including Prashant Kishore, who's sort of known as the very intellectually politically savvy experts on Indian electoral mapping, उनका भी काफी टाइम से ये perspective रहा है कि the opposition must unite and must run at a regional level because otherwise it stands no chance in terms of the national elections in 2024. Okay, all right. So that was the Indian elections. लेकिन उज़ैर, अब winners and the losers of the week हम उस पे बात कर लेते हैं. आपके क्या है winners and losers, बताइए. I will say कि क्योंकि राना सनाउल्लाह का जो 15 किलो हेरोइन का केस जो है वो डिसमिस हो गया, तो I would say the loser for me would be शहरियार अफरीदी. अल्लाह को जान देनी तो थी, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये भी कसम खा ली थी कि ये तो फौज ने करवाया था, और ये केस अब बिल आखिर खत्म हो गया. एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस केसेस जो पिछले दौर में हुई. लेकिन फिर दूसरी तरफ
अंबर, I इसके would say अंदर कि if I उसका can interrupt you on the Rana sure. Sanaullah case, क्योंकि इस पे मुझे मेरे दोस्त, especially those who loosely follow पाकिस्तानी politics, बाहर जो बैठे होते हैं, वो पूछते हैं कि जी ये देखो केस था इसके ऊपर हेरोइन का, ये भी रिवर्स हो गया, ये इनकी गठजोड़ है. You are a journalist, you know this stuff better than anybody else. Was there anything to this case? Okay, going back to the Rana Sanaullah case, like even जब ये case हुआ था, I think what we knew was that this case didn't have the evidence to support it. What we knew, what we could see was कि judges को change किया गया था in this case. I'll give you an example. राना सनाउल्लाह को जिस तरह से गिरफ्तार भी किया गया था, जाहिर है वो एक उनको ये दावा किया गया था कि उनकी गाड़ी में ये हेरोइन डाली गई थी, वहां उसको कैरी कर रहे थे. There were lots of promises that there would be a video that would show that he had the 15 kilos of heroin in his car. That didn't really happen. और 15 किलो हेरोइन के तो हेरोइन डीलर भी अपनी गाड़ी में मुझे नहीं लगता लेके घूमते. मतलब ये दावा तो यही था ना, दावा तो यही था. और जो दावा कर रहे थे, यानी कि मैं अगेन that's why I picked Shahryar Afridi, who was a former minister in the PTI government, क्योंकि जो वसूख से वो बात कर रहे थे, जब उनसे आप सबूत की बात करते थे कि अच्छा आपके पास सबूत क्या है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे, वो सिर्फ अल्लाह की कसमें खाने पे आ जाते थे. And again, and when we looked at that, के जो CCTV footage थी, some of the facts of the case, which is where was that heroin, that video, which was supposed to be, absolutely incontrovertible proof के Rana Sanaullah did actually have that heroin, वो भी नहीं थी. I think that like a lot of the cases against many other people, such as Khaja Saad Rafiq, Fawad Hassan Fawad, this was bound to be dismissed. I'm not surprised. This is not one of those cases where I feel that there was enough for it to stand had it been tried fairly. Okay, so that's a good explainer. Thank you for that, because I think maybe for the audience tuning in who are confused about this case, this helps them sort of get. But I just want to say again, उज़ैर, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ ये पाकिस्तान है, and I did want to add कि इस वक्त अगर राना सनाउल्लाह का केस डिसमिस हो गया है, दूसरी तरफ आपके पास आजम सवाती है, जिनको कुछ ट्वीट्स की बुनियाद पर और अपने गुस्से का इजहार करने की बुनियाद पर दोबारा से गिरफ्तार किया गया, बलूचिस्तान लेकर गया, वहां जाया गया, और फिर दोबारा जब लग रहा था कि उनको एटलीस्ट बेल मिल जाएगी, उनको फिर सिंध ले जाया गया. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनजस्टिस. अगर आजम सवाती को पकड़ना था तो उनकी करप्शन, अलेजेड करप्शन की बुनियाद पे हो सकता था, या जो उन्होंने जो अपने इख्तियारात से तजावुज किया था, वो जो लैंड केस था, कुछ गरीब लोग थे उनकी जमीन पर जो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था उसकी बुनियाद पर, लेकिन वहां नहीं हुआ, कुछ ट्वीट्स की बुनियाद पे हुआ. एंड आई थिंक दैट इज आल्सो भी आल्सो मिसमार किया गया है रिसेंटली. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज आल्सो टेल्स यू कि चेहरे बदलते हैं, लेकिन वो टैक्टिक्स जो है वही होती हैं. सो आई डोंट सी इट एज it wouldn't stand if there was a fair trial, if there was a fair case, if the courts were able to do the job as independently as they claim. जी, ये जो फैशिज्म है अंबर, ये स्टेट की रगो में है और खून की तरह बह रहा है, तो ऑब्वियसली लोग बदल जाते हैं, लेकिन हरकतें जैसे आपने कहा वही रहती हैं. बट मूविंग ऑन, आई थिंक वी हैव द सेम विनर्स फॉर दिस वीक, बट यू गेट टू स्टार्ट दिस टाइम बिकॉज़ आप ज्यादा एक्साइटेड हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड विनर्स No, के I'm ऊपर. not. Okay, look, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स बहुत क्लोजली फॉलो नहीं करती. My interest is purely because I think they're exciting matches, and I've been watching the World Cup, and it's been and mostly because of my husband, because he follows it very closely. But I think the match between with Morocco, it's been a World Cup full of surprises, but that was very cool. Yeah. And I think, and I will say कि in that respect, Ronaldo का बहुत सारे लोगों को अफसोस हो रहा था कि Ronaldo out हो गया है, but honestly speaking, he's a bit of a brat, so I really didn't feel that sorry for him. Yeah, I was disappointed in the way he left alone and did not stick around for his team. It's kind of like sour grapes. There you go, he's a brat. But Morocco ka jeetna, first African country to make it to the semis. Yes. Thousands of Moroccans in Qatar. Waka right waka. It's just amazing. It's brilliant to see, and it's just at a human level, right? Amber, like the manager they have came in August. So to go from August to December in a matter of months and take a team with you to the semifinals of a World Cup is amazing. Yeah. There were heartwarming moments out of that win as well. One of the players brought his mother onto the field.
और वो आई. It was amazing to see that. It was amazing to see the way that they've played. And again, एक तरह से कुछ sports circles में criticism था कि बड़ा defensive खेलते हैं ये वो. For those of the listeners who follow closely, including your husband who follows the sport closely, to defend like that and to be as organized as they were across a tournament, the way they have been, especially in a quarterfinal, is not just parking the bus. It requires a lot of drilling and a lot of training and a lot of heart to defend like that. So it's amazing, and I hope वो एक tweet आई थी कि जो 700 AD का मोरक्को है वो कंग्रेचुलेट कर रहा है 2022 के मोरक्को को कि आपने आइबेरियन पेनिनसुला कॉन्कर कर लिया है और अब फ्रांस yes. अगला ये हम मुसलमानों में काफी बात हो रही है. वैसे ये मैं बता दूं, that was a conversation that was happening in Pakistan as well. अंग्रेज हार गए और फ्रेंच उधर जीत गए दूसरा. तो अब वेडनेसडे को जो है मोरक्को द कॉलोनी अगेंस्ट फ्रांस द कॉलोनाइजर will be interesting to watch as well. So I think that's the winner. Amber, on my side the loser is Ishaq Dar. Not because of the economy जो हमने बात की मईशत के ऊपर, but because of his tweets. मतलब वो कभी जो है वो दुआएं की ट्वीट्स कर रहे हैं, कभी कुओं की दुआएं की बात कर रहे हैं, कभी वो दाता दरबार जा रहे हैं. तो अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बात दुआओं तक आ चुकी है, दुआ पे उतर जाए तो यानी कि हालात शायद वो नहीं है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ संभल जाए, जो हम जनवरी तक देख रहे हैं कि चलो शायद वहां कुछ उम्मीद है. बिल्कुल. अब वो दुआ आखिरी यही रह गई है कि अमेरिका का कोई जहाज जो है वो $1 2 अरब लेके कहीं जा रहा और पाकिस्तान में लैंड कर जाए जबरदस्ती किसी तरह से, तो हमारे हालात बेहतर हो जाएं. बट आई थिंक ही इज बिन इन अ वियर्ड वे. अंबर, आई वाज टॉकिंग टू समबडी अबाउट दिस यस्टरडे कि अगर 2018 में जो कुछ हुआ वो अगर ना होता और लेट्स अस्यूम PMLN जीत जाती और डार साहब वुड हैव कम बैक, तो यही उन्होंने करना था क्योंकि उस वक्त भी IMF पे जाना था और यही हाल होता. एंड दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ डार. Perhaps this is now finally the end of Dar, who promised to bring the rupee dollar under 200 and has failed, and now he's praying to the Lord कि किसी तरह कोई मौजा हो जाए और ये मईशत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए. तो for me he's the loser of the week. All right. So with that we close this episode of Nazuk Ward. जरूर हमें feedback भी जरूर दीजिएगा. Like and subscribe. हमने अभी तक उज़ैर हमने लोगों को ये नहीं कहा, बताया कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. can watch it. Do suggest topics for us और हम कोशिश करेंगे मजीद जैसे कोई बड़ी स्टोरी होती है, इंटरव्यूज भी आपकी तरफ, whether it's experts or whether it's policy makers. Thank you. खुदा हाफिज.